Now let us discuss more about the properties of these elements. They are colored formation, as already discussed. They are colored because of DD transition. They are able to form complex formation because they are having variable oxidation state and vacant d orbitals. Now, besides of all these properties, they have also been able to exhibit catalytic properties because of similar sizes and presence of unpaired electrons make most of the d block elements showing paramagnetic behavior. So these all properties are also being discussed later half in this chapter. Now, greater similarity in the properties of d block elements and because of their similar sizes, that properties of transition elements of a horizontal row in contrast to non-transition elements. Some group similarities also exist because of similarity in sizes. So let us further discuss 3D elements in detail. Now here, the next and the very first general properties is the physical properties of d block elements, and the physical properties are they are typically having showing metallic properties, heightened metallic properties. क्यों? क्योंकि सारे ही heavy metals हैं. Electrons can leave the valence shell. Tensile strength क्योंकि heavy metals है, compact packing है, ductile है, malleable है because of the compact packing. And metallic properties, they are able to be beaten into thin sheets and thin fires. High thermal and electrical conductivity because of electrons. Metallic luster because of स्मूथ सरफेस. लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैंगनीज एक्सेप्शंस हैं क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी हैविंग complete d orbital and manganese it is having half filled d5 configurations. And typically the metallic structures are there at normal temperatures because they have one of typical metallic structures because they belong to d block, but most of the transition properties are not shown by them because of half filled and fulfilled d elements. Now, with the exception of zinc, cadmium, and mercury, they are very hard, having low volatility, melting point and boiling points are very high. Now, let us in detail discuss about the melting and boiling point. Here we can see manganese is having the lowest melting point क्योंकि manganese में D5 configuration है और atomization enthalpy minimum है. D5 electrons की वजह से stable configuration है और इसे किसी भी तरीके की metal bonding बनाने की ज़रूरत नहीं है. Titanium, vanadium, chromium are showing increase in the metallic bond because of increase in unpaired electrons. Chromium is having highest unpaired electron D6, highest metallic bonding, or you can say highest enthalpy of atomization. So it is having highest melting point also. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग Fe, कोबाल्ट और पैलेडियम में स्टार्ट होती जा रही है वैसे वैसे इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सेम इज बीन सीन इन सेकेंड डी सीरीज एंड थर्ड डी सीरीज. ये मोलिबिडनम and tungsten are having the highest melting point in their own series because of maximum number of unpaired electrons, 6 in each, and they have highest enthalpy of atomization which makes their melting point very high. Rest from zirconium to molybdenum increase, hafnium to tungsten increase because of increase in unpaired electron. After that, the melting point decreases because of decrease in number of unpaired electron or decrease in atomization enthalpy. So this is all about discussed about the melting point on which the questions come. Now same thing is being observed with the atomic number atomization enthalpy graph is also shown over here, which is showing the same behavior that manganese in the first transition series is having the lowest melting point क्योंकि उसे bonding की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? Because of stable configuration. Same is with other middle elements of D5 configuration of second series and third series. Now coming to the atomic sizes or ionic sizes, यहाँ पे तीन trends हैं. Initially left to right because of increase in nuclear charge or increase in atomic number, general atomic radii decreases. Reason is also given over here कि nuclear charge atomic number की वजह से increase हो रहा है इसलिए जनरल विल इंक्रीज. लेकिन मैंगनीज तक ये डिक्रीज और मैंगनीज के बाद ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ऑब्जर्व की जाती है. रीज़न बिकॉज ऑफ नो नेट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. क्यों नो नेट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है? क्योंकि मैंगनीज के बाद electron pairing starts which increases electron repulsion
and as it increases electron repulsion, to minimize that slightly size increases, and due to increase in nuclear charge size decreases. यानी कि लेफ्ट टू राइट मैंगनीज के बाद भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग की वजह से स्लाइटली साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. द शील्डिंग इफेक्ट is poor, but is still due to the repulsion of these inter-electronic repulsion, the size is almost same. But last में that it means the end D10 configuration. In D10 configuration size will slightly increase because of stable configuration. अब डाउन द ग्रुप की बात करें तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में साइज इंक्रीज होगा, लेकिन सेकंड से थर्ड में आएंगे तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डाउन द ग्रुप इन डी सीरीज atomic size will decrease. So these are the four trend in the atomic sizes that we see in D block elements. Now the next property is ionization enthalpy. Ionization enthalpy also follows almost the same trend as that of size, that left to right increases due to increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner d electrons and successive enthalpy. Now the values show that the successive enthalpy of these elements do not increase in a stepwise manner as in the non-transition elements because of filling of d electrons. Steeply increases because there is no much change in the ionization enthalpy. Now the first ionization enthalpy in general increases, लेकिन magnitude of the increase in second and third ionization enthalpy for successive invariants is very high. मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड और थर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस, सेकेंड इज़ ऑल्सो फ्रॉम एस, लेकिन थर्ड बहुत ज़्यादा ही हाई होती है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन डी से है. सो देर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड बट इरेगुलर ट्रेंड एंड सीन इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी सब शेल. So this was all about the ionization enthalpy. And if the configuration is stable, means you can say half filled, then because of exchange energy the element of d block is, you can say, is very stable. So when several electrons occupy a set of degenerate orbitals, the lowest energy state corresponds to maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spins. हुंड्स रूल. मतलब यहाँ पे सिंपल है, जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ऑफ मैंगनीज. और क्रोमियम नेचुरली स्टेबल है बिकॉज ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज Fe2 प्लस Mn2 प्लस, ये सब स्टेबल है बिकॉज ऑफ स्टेबल डी configuration. So this is a reason. Now a question also comes, the ionization enthalpy of Fe2 plus is lower than that of Mn2 plus. reason same है कि Mn2 plus एक stable D5 configuration में है और Fe2 plus का ionization enthalpy इसलिए कम है क्योंकि वो unstable है. Now coming to the oxidation state, that will discuss in our next video.